6 अक्टूबर को गोवा के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रिसीव्ड हेवी और हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल. All stations reported rainfall exceeding 6.5 centimeters, and highest was reported from Panji. Panji से 18 centimeter, 18 centimeter report हुआ. ओल्ड गोवा, मप्सा, फिर कपेम, ये सारे स्टेशनों से अराउंड 13 सेंटीमीटर रिपोर्ट हुआ. देन फ्रॉम पेरने, वालपोई, सांकली सब 9 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट हुआ. और सांगीम 11 सेंटीमीटर, मरगांव 9 सेंटीमीटर और कानकोना से भी 6 सेंटीमीटर रेनफॉल, 7 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ. और कल का जो स्टेट एवरेज रेनफॉल जो था वो नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स हायर था. और उसके कारण पोस्ट मानसून सीज़न का जो स्टेट एवरेज रेनफॉल है नॉर्मल से अराउंड 150% ज़्यादा है आज के दिन. और इसका हम रीजंस अगर देखेंगे, इफ़ यू वर फॉलोइंग IMD's रेगुलर बुलेटिन्स, it was described earlier that there was a cyclonic circulation over the coast of Tamil Nadu, और उसका westward movement भी expected था from around 5th of October, and heavy rainfall warning was issued for North and South Goa district on 6th and 7th of October. So the thing has happened is that circulation moved across, and it is now over East Central Arabian Sea. You can see some clouding here. This clouding is because of the circulation which was earlier over the coast of Tamil Nadu. So because of this system, the movement of this system, yesterday there was heavy thunder shower activity over Goa, and state average rainfall itself was in the very close to very heavy rainfall. So ये जो system है, it is expected to be there over East Central Arabian Sea and nearby coastal areas for about 4 to 5 more days. Because of the presence of the system, heavy rainfall के chances भी है गोवा के ऊपर, even though we are not expecting the kind of thunder shower activity that took place on 6th October. Still there is possibility of rain to be accompanied with lightning and thunder. Along with that, heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6.54 centimeters, that is possible at 3 or 4 places over Goa on 7th October, and the distribution may further decrease in the coming days. But it is requested that since there is possibility of this weather system to continue, please be updated with the warnings that IMD is issuing in the coming days. जैसे हमने बताया था 7th, 8th और 9th तीनों दिनों में थंडर शावर एक्टिविटी होने के चांसेस हैं स्टिल गोवा के ऊपर, दो इट्स इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कीप ऑन डिक्रीजिंग. उसी तरह हेवी रेनफॉल के भी चांसेस है 7th और 8th को. 7th को 3 to 4 स्टेशन में होने की पॉसिबिलिटी है ओवर नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट, और 8th को मे बी द डिस्ट्रीब्यूशन विल डिक्रीज कंपेयर टू द that on 7th of October. और जैसे ये जो information है, whenever there is any thunderstorm clouds are observed near or around Goa, IMD issues nowcast warning. और lightning, if thunder showers are expected in, or avoid taking shelter under tall structures or isolated trees, as that may invite lightning hazards. और अभी मानसून विड्रॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो द नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ मानसून फ्रॉम गोवा is 14th of October, and the withdrawal should ideally start from northwestern part of the country from around 17th September, लेकिन इस बार डिले हुआ है और as on 7th October ये वेस्ट राजस्थान के और नॉर्थ गुजरात के कुछ एरिया तक ही विड्रॉवल हुआ है. And it is expected that in the coming 3 to 4 days the withdrawal may come even up to Madhya Pradesh region, and further withdrawal will be based on prevailing conditions, and that will be informed accordingly. And apart from that, if we speak about weather systems in the coming days, there is possibility of a low pressure area to form over Andaman Sea,
near the Bay of Bengal area, and it is very likely to intensify further and move towards Andhra Pradesh Orissa coast in the following 4 to 5 days from 10th October. So accordingly, the weather patterns may change over Goa too. So please be updated with the warning sign information shared by IMD. All the information is available on IMD's social media accounts and on its website. Please be regularly updated. Because of the circulation that was mentioned earlier, जैसे कि ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के नाइबरहुड में जैसे वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके कारण ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और कोस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका, ये दोनों जगह पे 7th और 8th अक्टूबर को विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर गस्टिंग टू 60 किलोमीटर्स पर आवर हो सकते हैं. इसलिए फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू दीज एरियाज on 7th and 8th of October.